I am Dr. Ashok Kumar Saini, Associate Professor in Mathematics in BLJS College, Tosham, District Bhiwani, Haryana. Today I will deliver lecture on Euler's 5 functions, examples of Euler 5 functions for the students of BA, BSc, second SEM, first year, mathematics paper, first, number theory and trigonometry. Example 1 is find phi of 600. We have n equal to 600 equal to factorize it 2 का क्यूब प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 into 5 का स्क्वायर इक्वल टू P1 की पावर K1, P2 की पावर K2, P3 की पावर K3. तो P1 यहाँ 2 है, P2 यहाँ 3 है, P3 यहाँ 5 है, K1 3 है, K2 1 है, K3 2 है. We know that if n is greater than 1 has a prime factorization, n equal to P1 की पावर K1, P2 की पावर K2, PR की पावर KR, then phi of n equal to n 1 minus 1 by P1, 1 minus 1 by P2, 1 minus 1 by P3, 1 minus 1 by PR. Phi of 600 equal to 600, 1 minus half, 1 minus 1 by 3, 1 minus 1 by 5 equal to 600 into half into 2 by 3 into 4 by 5 equal to 160. Next example, find phi n for n equal to 68. Example MDU 2019 KU 2016-15. We have n equal to 68 2 का स्क्वायर इंटू 17 P1 की पावर K1, P2 की पावर K2. Find phi n for n equal to 68. P1 equal to 2, P2 equal to 17, K1 equal to 2, K2 equal to 1. तो phi n यही फार्मूला n 1 minus 1 by P1, 1 minus 1 by P2, 1 minus 1 by P3, 1 minus 1 by PR. We have phi of 68 equal to 68, 1 minus half, 1 minus 1/17 बराबर है 68 हाफ इंटू 16/17 इक्वल टू 32. Evaluate phi of 462. Solution, we have n equal to 462 equal to 2, 3, 7, 11 equal P1 की पावर K1, P2 की पावर K2, P3 की पावर K3, P4 की पावर K4. Here P1 equal to 2, P2 equal to 3, P3 equal to 7, P4 equal to 11, K1 equal to K2 equal to K3 equal to K4 equal to 1. Now phi of n equal to n 1 minus 1 by P1, 1 minus 1 by P2, 1 minus 1 by P2, P3, 1 minus 1 by Pn. तो ये क्या हो गया 462. Phi of 462 equal to 462 n 1 minus half, 1 minus 1 by 3, 1 minus 1 by 7, 1 minus 1 by 11. तो 120 हो गया. Next example, find the number of positive integers less than equal to 1800 that are co-prime to 1800. यानी phi of 1800 निकालना आपने. Second part, find the number of positive integers less than equal to 1800 that have a factor greater than 1
इन कॉमन विद 1800। तो वी हैव फर्स्ट पार्ट n 1800 है तो 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इक्वल P1 का पावर K1 P2 की पावर K2 P3 की पावर K3 मेरे P1 इक्वल टू 2 P2 इक्वल टू 3 P3 इक्वल टू 5 K1 3 K2 2 K3 2। Now we know that number of positive integers less than equal to 1800 that are co-prime to 1800 are, that is value of phi of 1800. Thus we have to calculate phi of 1800. तो phi of n इक्वल टू n 1 माइनस ये फार्मूला हो गया आपका। तो 1800 1 माइनस हाफ 1 माइनस 3 1 माइनस 5 1 5 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 1 2 2 3 3 4 5 इक्वल टू 480। Second, number of positive integers less than equal to 1800 that are co-prime to 1800 are 480 हैं ये। Number of positive integers less than equal to 1800 that are co-prime to 1800 are 480. Therefore, number of positive integers less than equal to 1800 that are not co-prime to 1800 or 1800 minus 480. Means number of positive integers less than equal to 1800 that are a factor greater than 1 in common with 1800 are 1200 1320। ठीक, जो को प्राइम नहीं हो 1320 है, जो को प्राइम है 480 है। शो डैट 5 की पावर 13 के तो 5 की पावर 15 गुणा 15 की पावर k माइनस 1 वेयर k इज ए पॉजिटिव इंटीजर। Solution, we have phi of 15 equal to 5 3 into 5 5 of 3 into 5 5 equal to 3 in minus 3 की पावर 0 5 minus 5 की पावर 0 क्योंकि 5 of p की पावर k equal to p की पावर k minus p की पावर k minus 1 for any prime p where k is a positive integer। तो this is 3 minus 1 into 5 minus 1 equal to 2 into 4 equal to 8। मल्टीप्लिकेटिव ठीक। नेक्स्ट इज फाइव ऑफ 15 इक्वल टू 8। अब क्या है नेक्स्ट कैले काटना है 15 के 5 ऑफ 15 के इक्वल टू 5 ऑफ 3 की पावर के 5 की पावर के 5 ऑफ 3 की पावर के 5 की पावर के 3 की पावर के माइनस 3 की पावर के माइनस 1 5 की पावर के माइनस 5 की पावर के माइनस 1 3 की पावर के माइनस 1 3 माइनस 1 5 की पावर के माइनस 1 4 इज इक्वल टू 8 इंटू 3 गुणा 5 की पावर के माइनस 1 8 15 की पावर के माइनस 1 यूजिंग 1। तो 5 ऑफ 15 की पावर के इक्वल टू 5 ऑफ 15 इंटू 15 की पावर के माइनस 1 1 क्या है 5 15 इक्वल टू 8 5 15 की पावर के इक्वल टू 5 15 इंटू 15 की पावर के माइनस 1 यही प्रूव करना था। शो डैट दिस ऑल्ट है। नेक्स्ट शो डैट 2 की पावर 4 डिवाइड्स 5 ऑफ 1155। वी हैव 1155 इक्वल टू 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11।
5 1155 इक्वल टू 5 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11। तो मल्टीप्लिकेटिव रूल लगा दिया यहाँ पे 5 of 3 5 of 5 5 of 7 5 of 11। तो we know that 5 of n is even if n greater than 2। 5 of n is even if n greater than 2, therefore 5 of 3 5 of 2 5 of 3 5 of 2 5 of 3 5 5 5 of 7 5 of 11 all are even। अगर n ग्रेटर देन 2 होता है तो 5 of n इवन होता है, तो सारे इवन होंगे, इसलिए इनकी प्रोडक्ट भी और ऑल आर इवन। implies 2 डिवाइड 5 of 2 5 of 3 5 of अलग अलग डिवाइड करा 2 डिवाइड 5 3 2 डिवाइड 5 5 2 डिवाइड 5 7 2 डिवाइड 5 11। तो 2 की पावर 4 डिवाइड 5 3 5 of 5 5 of 7 5 11 implies 2 की पावर 4 डिवाइड 5 of 1155। नेक्स्ट शो डेट 5 of n इक्वल टू 5 of n plus 1 इक्वल टू 5 n plus 2 4 n plus 2 for n इक्वल टू 5186 इक्वल टू n इक्वल टू 5186 बराबर 2 इंटू 25 93। therefore 5 of n equal to 5 of 5166 using 5 of n equal to n 1 minus 1 by p1 1 minus 1 by p2 1 minus 1 by pn we get 5 of 5186 इक्वल टू 5186 1 माइनस 1 बटे 2 1 माइनस 1 बटे 2983। तो 5186 इंटू हाफ इंटू 2592 बटे 2593। तो ये क्या है 2592 आ गया। नाउ n प्लस 1 इक्वल टू 5187 इक्वल टू 3 इंटू 7 इक्वल इंटू 18 इंटू 19। therefore 5 of n plus 1 इक्वल टू 5 of 5187 इक्वल टू 5187 1 माइनस 1 बटे 3 1 माइनस 1 बटे 7 1 माइनस 1 बटे 13 1 माइनस 1 बटे 19 बराबर 5187 2 बटे 3 6 बटे 7 12 बटे 13 18 बटे 19 बराबर 2592। also n plus 2 इक्वल टू 5188 बराबर 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर इंटू 1297। therefore 5 of n plus 2 इक्वल टू 5 of 5188 बराबर 5188 1 माइनस हाफ 1 माइनस 1200 1 बटे 1297 बराबर है 5188 हाफ 1296 बटे 1297 2592। तो 5 of n प्लस 1 भी 2592 आया था, 5 of n भी 2592 आया, 5 of n प्लस 2 भी 2592।
तो इससे क्या प्रूव हो गया, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थ्री, फाइव ऑफ एन इक्वल टू फाइव ऑफ एन प्लस वन इक्वल टू फाइव एन प्लस टू इक्वल हो गए फॉर एन इक्वल टू 5186। ठीक, नेक्स्ट प्रूव डेट फाइव ऑफ एन इक्वल टू फाइव एन प्लस टू इज सेटिस्फाइड फॉर एन इक्वल टू टू इंटू टू पी माइनस एक वेन एवर पी एंड टू पी माइनस वन आर बोथ odd prime. Let p and 2p minus 1 be odd primes. Then phi of n equal to phi of 2 into 2p minus 1, phi of 2 phi of 2p minus 1, phi of 2 क्या होता है 2 माइनस 1, phi of 2p माइनस 1, 2p माइनस 1 क्योंकि फॉर एनी प्राइम पी फाइव ऑफ पी इक्वल टू पी माइनस 1, तो 2 बाहर आ गया, पी माइनस 1 प्लस फाइव ऑफ एन माइनस एन प्लस 2 इक्वल टू फाइव ऑफ 2 इंटू 2p माइनस 1 प्लस 2, फाइव ऑफ एन था नहीं, ये फाइव ऑफ एन प्लस 2, फाइव ऑफ 2p माइनस 1 प्लस 2 फाइव ऑफ 4p, फाइव ऑफ 2 का स्क्वायर इंटू पी, फाइव ऑफ 2 का स्क्वायर इंटू 5p, क्योंकि 2 की पावर p एंड p इज को प्राइम, इफ सो फाइव इज मल्टीप्लीकेटिव, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 p माइनस 1, कि 5 की पावर p इक्वल टू p की पावर k माइनस p की पावर k माइनस फॉर एनी प्राइम p वेयर k इज पॉजिटिव इंटीजर, तो 2 इंटू p माइनस 1, thus फ्रॉम 1 and 2 we have phi of n equal to phi of n plus 2. Next, prove that phi of n equal to n by 2 if n बराबर है 2 की पावर k for some integer k greater than equal to 1. Let phi of n equal to n by 2. Since phi of n is an integer for all positive integers n, therefore since phi of n is an integer for all positive integers, therefore n by 2 is an integer, implies n is an integer. Let n बराबर है 2 की पावर k into m, where k greater than equal to 1 and m is odd. Now phi of n equal to n by 2, phi of 2 की पावर k into m equal to 2 की पावर k into m by 2. तो क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव होता है तो फाइव ऑफ 2 की पावर k इंटू फाइव ऑफ m इक्वल टू 2 की पावर k माइनस 1 इंटू m, तो और 2 की पावर k माइनस 2 की पावर k माइनस 1, फाइव ऑफ m इक्वल टू 2 की पावर k माइनस 1 इंटू m, और 2 की पावर k माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1 फाइव m इक्वल टू 2 की पावर k माइनस 1 इंटू m, क्योंकि फाइव m इक्वल टू m विच इज़ पॉसिबल फॉर m इक्वल टू 1, फाइव m इक्वल टू m विच इज़ पॉसिबल फॉर m इक्वल टू 1. Thus n इक्वल टू 2 की पावर k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इफ फाइव n इक्वल टू n बाई 2. दस क्या हो गया, n इक्वल टू 2 की पावर k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इफ फाइव ऑफ n इक्वल टू n बाई 2. प्रूव दिस फॉर सम k ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये होल्ड हो गया. नेक्स्ट, कंसीडर कन्वर्सली लेट n इक्वल टू 2 की पावर k ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो फाइव ऑफ n इक्वल टू फाइव ऑफ 2 की पावर k, तो 2 की पावर k माइनस 2 की पावर k माइनस 1, तो 2 की पावर k माइनस 1 कॉमन 2 माइनस 1, 2 की पावर k माइनस 1 इक्वल टू 2 की पावर k बाई 2 इक्वल टू n बाई 2. दस फाइव ऑफ n
equal to n by 2 if n equal to 2 की power k greater than equal to 1. Hence the result. अब example 10 है, find all possible values of n which satisfy phi of n equal to 23. We know that phi of n equal to 1 for n equal to 1 or 2, and phi of n even for all n greater than equal to 3. Since phi of n equal to 23 is odd, therefore there exists no n satisfying phi of n equal to 23. Phi of n equal to 23 is odd. Odd नहीं होता कभी ये. Phi of n equal to even for all n greater than equal to 3. Therefore there exists no n satisfying phi of n equal to 23. Find all possible values of n which satisfies phi of n equal to 23. होता नहीं है. Hence phi of n equal to 23 has no solution. Okay. Next is residue mod m. Residues. If A is congruent to B mod m, then B is said to be residue of A modulo m. B को क्या कहेंगे? Residue is said to be residue of A modulo m. Since congruence modulo m satisfies symmetric property, therefore A is also residue of B mod m. Thus each integer A or B is said to be residue of the other. List residue mod m. If A is congruent to B mod m and 0 less than equal to B less than equal to m, then B is said to be least non-negative residue of A modulo m, or simply list residue of A mod m. कहता है if A is congruent to B mod m and 0 less than equal to B less than equal to m, then B is said to be least non-negative residue of A modulo m, or simply least residue of A modulo m. B less than m है. A congruent to B mod m and B less than m greater than equal to 0. B is positive or either 0. Then B is said to be least non-negative, positive नहीं है, least non-negative residue of A modulo m. Least non-negative or simply least residue of A mod m. In other words, the least residue of A mod m is same as the remainder obtained when A is divided by m. जब A को m से डिवाइड करते हैं तब रिमाइंडर है ये. फॉर एग्जाम्पल कंसीडर 37 कॉन्ग्रुएंट टू 12 mod m mod 5. तो 37 कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 5. 37 कॉन्ग्रुएंट टू 7 mod 5 है. तो यहाँ 12 इन दिस कॉन्ग्रुएंस 12, 2 और 7 आर रेजिड्यूज ऑफ 37 mod 5 है. लेकिन छोटा कौन सा 2 है ये. बट 0 इज 2 पॉजिटिव है और 5 से छोटा है, m से छोटा हो. सिंस 2 इज लेस देन 2, 2 is greater than 0 and less than 5, therefore 2 is the least residue of 37 mod m 5. The above example shows that any integer A can have many residues mod m. कोई भी integer, the above example shows that any integer A can have many residues mod m. जैसे 12 भी है, 2 भी है, 7 भी है. मैनी रेजिड्यूज mod m है. रिमार्क है, the least residue of A mod m is always unique element of the set 0, 1, 2, 3 up to m minus 1, 2.
which A is congruent mod M. The list residue of A mod M is always a unique element of the set 0, 1, 2 up to m minus a, to which A is congruent mod M. लिस्ट रेजिड्यू होता है ये, ऑलवेज यूनिक एलिमेंट ऑफ द सेट 0, 1, 2, 3 up to m minus 1 to which A is congruent mod M, to which A is congruent mod M. ठीक, here B is actually the least non-negative residue, but for brevity here B क्या कहते हैं is actually the least non-negative residue, but for brevity we write it as least residue. non-negative हटा दिया वर्ड, नॉट है. complete residue system modem, complete residue system modem definition: a set A1, A2, A3, AM is called a complete residue system modulo M if for every integer phi there is one and only one A1 such that B is congruent to A1 mod M. A set A1, A2, AM is called a complete residue system modulo M if for every integer b है कोई integer, there is one and only one A1, सिर्फ एक ही A1 है. for every integer, कोई भी integer ले लो v, there is only one and only one A1 such that B is congruent to A1 mod M. Second definition: a set of integers m, a set of m integers which whose list residues mod m are 0, 1, 2, 3 up to m minus 1 is in some order. A set of m integers whose list residue mod m are 0, 1, 2, 3 up to m minus 1 in some order is called a complete residue system mod M, is called a complete residue system mod M, written as CRS mod M. A set of m integers whose list residues mod M are 0, 1, 2, 3 up to m minus 1 in some order is called a complete residue system mod M. Written as CRS mod M. A set of m integers whose list residues mod M are 1, 0, 1, 2, 3 up to m minus 1 in some order is called a complete residue system mod M, written as CRS mod M. दोबारा देख क्या कहता है ये. A set of m integers whose list residues mod M are 0, 1, 2, m minus 1 is in some order is called a complete residue system